Let us see the next question. Following financial data are available of RK Ltd for the year ended 31st of March 2020. Is 8% debentures of 125 million, 10% bond of 50 million, equity share of 100 billion, face value is 10. यानी हमको ऐसा दे रखा है डेट से दे रहा 10 million equity shares, reserves and surplus is 300, total assets is 600, asset turnover ratio is 1.1, effective interest rate is 8%, effective tax rate is 40%, operating margin is 10%, dividend payout ratio is 16.67%, cost of equity दे रखा है, required rate of return by the investor, P0 दे रखा है, current market price of the equity share. क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ आरके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020, calculate growth rate, find out fair price of the equity share using dividend discount model approach. फ्रेंड्स, ये फेयर प्राइस लिखा हो सकता है, या तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा हो सकता है, या तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा है, इट इज वन एंड द सेम. एंड लास्ट क्वेश्चन में एडवाइस whether the share is underpriced or overpriced, that is a question. I request all of you to go through the question. Dear students, over here क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी is 600 million, asset turnover ratio is 1.10. तो ये दोनों इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके we can compute the sales value. Asset turnover ratio हमको ये बताता है what is the sales of the company for every 1 rupee of the asset. Assets कितना है? 600. So क्या होगा? 600 into 1.10. That comes to an amount of 660. यानी हमको क्या करना है? हमको सेल्स सबसे पहले कैलकुलेट करना है 660. It is in million term. उसके बाद हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है ऑपरेटिंग मार्जिन इज 10%. ऑपरेटिंग मार्जिन इज इंडिकेटिंग लेट्स से व्हाट इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ द सेल्स. तो अगर ये 660 मिलियन है तो ये कितना हो जाएगा? 66 मिलियन हो जाएगा. फिर हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है डिबेंचर्स के बारे में, हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है बॉन्ड के बारे में. So using that we'll calculate the amount of interest. इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो आएगा दैट इज ईबीटी. फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे? से इनकम टैक्स को डिडक्ट करेंगे एंड देन विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द अर्निंग आफ्टर टैक्सेस. जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस होगा उसमें से हम लोग 1/6 क्या करें? दैट इज से क्या करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे. और बाकी का जो 5/6 होगा दैट इज द रिटेन अर्निंग. ऐसा करके हमको ऑपरेटिंग इनकम का स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे पहले पूछ रखा है दैट आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, दैट इज बनाना है. दिस इज द वे द इनकम स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड. चलो राइट आंसर. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स. उस पर लिखो total asset turnover ratio is equal to sales upon assets. So as far as sales is concerned, it is equal to assets into asset turnover ratio. Assets of the company is 600 million. Into asset turnover ratio is 1.1.
So it comes to 660 million. That is the way the sales is calculated. उसके बाद preparation of income statement. That is what we understand is answer of the first question. Column number 1 होगा particulars और column number 2 होगा answer. In that say we will start with EBIT. EBIT कैसे होगा? Sales 660 million into 10%. That comes to 66 million. ऐसा करके हम लोग EBIT की शुरुआत करेंगे. Now friends, importantly over here, the question is providing the information about the debt financing, जिसमें डिबेंचर्स भी दे रखा है, बॉन्ड भी दे रखा है. क्वेश्चन में हमको इंपॉर्टेंटली एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, दैट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. तो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, ये जो टोटल डेट फाइनेंसिंग है ना, वो टोटल डेट फाइनेंसिंग इनटू 8%, ऐसा करके हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 125 मिलियन प्लस 50 मिलियन, दैट इज 175 मिलियन into 8%. Less interest. क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है रिगार्डिंग डिबेंचर्स, इट इज 125 मिलियन प्लस बॉन्ड इट इज 50 मिलियन. और इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन में हमको दे रखा है व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इट इज 8%. सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 8%. So 125 plus 50, 175 into 8%. That comes to 14 million. उसके बाद हमारे पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्सेस. 66 minus 14, that comes to 52. Income tax rate is 40%. So earning after taxes is 60%. So 52 into 0.6. That comes to 31.2. That is what's the earning after taxes. उस पर हम लोग लिखेंगे डिविडेंड. It is 31.2 into 0.1667. So 31.2 into 0.1667. That comes to 5.20. Approximately we understand it is 1/6 of the earning. 31.2 divided by 6. That is 5.2. बाकी का जो बचेगा that is retained earning. So this is what we understand is retained earning. It is 31.2 minus 5.2. That comes to 26. This is the way retained earning can be calculated. That is the way the first answer is calculated. Second question. Question में पूछा that say what is the sustainable growth rate? That is a question. Now friends, growth rate calculate करने के लिए हमको दो चीज चाहिए. एक तो हमको retention ratio चाहिए और दूसरा हमको rate of earning चाहिए. That is the way we require two things for calculation of the growth rate. अच्छा, क्वेश्चन में हमको दे रखा है that say we are going to say distribute 1/6 of the earning.
इट मीन्स दैट हम लोग रिटेन कितना करेंगे 5/6। और दूसरा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी, दैट इज आर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है 31.2 and you can see that so the information is provided to us about the equity share capital and the reserves and surplus. So we can say something like this. Answer for the second question. Calculation of growth rate. That is G. कैसे किया जाएगा? It is B into R. B is what? Retention ratio. 1 minus 0.1667 into R rate of earning. It is earning after taxes divided by equity share capital plus reserves and surplus. So we understand that over here it is 1 minus 0.1667, that is 0.8333. Amount of earning after taxes is 31.2. Divided by equity share capital. Amount of the equity share capital is 100 million plus reserves and surplus is 300 million. So retention ratio is 0.8333 into R. कैसे किया जाएगा? 31.2 divided by 400 into 100, that comes to 7.8 into 0.8333, that comes to 6.4997, यानी कितना होगा? Approximately 6.5%. That is the way the growth rate is found. So this is the way we make the calculation of the growth rate. Third question में पूछा है find out fair price of the company using dividend discount model approach. Dear students, just I would like to tell you that in order to calculate price of security, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं. We have multiple methods. जैसे कि simple we have a kind of book value method. Then we have net asset method. ये क्वेश्चन में जो हमको करना है जिसका नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच, यानी फ्यूचर डिविडेंड को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करते हैं. देन वी हैव द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो. देन वी हैव अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड. देन वी हैव समथिंग लाइक कॉल्ड फ्री कैश फ्लो मेथड. फ्री कैश फ्लो में इक्विटी मेथड होता है, फ्री कैश फ्लो में फर्म मेथड होता है. ऐसा बहुत सारा मेथड्स है वैल्यूएशन का. और क्वेश्चन में हमको इक्विलिब्रियम प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, फंडामेंटल प्राइस ऐसा कुछ भी दे रखा है, पर वो एक जनरल टर्म है. उसके साथ साथ है ना हमको कौन सा मेथड ऑफ वैल्यूएशन है ना उसका इंफॉर्मेशन को फोकस करना है. जैसे कि यहाँ पे वी हैव टू डू आंसर विद द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे. लेट मी एक्सप्लेन. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ D0. हम लोग सबसे पहले डिविडेंड का कैलकुलेशन कर लेते हैं. देखो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस इज, सो डिविडेंड ही है हमारे पास. डिविडेंड इज 5.2 मिलियन. Dividend is 5.2 million. Number of equity shares. देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है हमको 100 मिलियन.
डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कितना है 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा 10 मिलियन। सो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा 0.52। सो दिस इज फॉर द वे वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ D0। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज दैट इज कैलकुलेट करने के लिए वी कैन अप्लाई CAPM, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमको दे रखा है, इट इज तो आई एम सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन टू अस डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, so we don't have to apply CAPM. Directly we can compute the P0. So calculation of P0, it is D1 upon K minus C। हमको D0 कितना दे रखा है 52 पैसे। हमने ऊपर ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया, ग्रोथ रेट इज 6.5%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 14%। लेस ग्रोथ रेट इज 0.05। दैट इज द वे द P0 इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, आई एम सॉरी, प्राइस 14 रुपीज है। So it is 0.52 into 1.065, that is 0.5538, divided by cost of equity 15% less 0.065, that comes to 0.085। So 0.5538 upon 0.085, that comes to 6.5153, तो 6.52 कर देते हैं। This is what is the fundamental price of the security। Next, the question says that advise whether the share is underpriced or overpriced। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि करंट मार्केट प्राइस इज 14, ऐसा दे रखा है, और हमने कैलकुलेट किया कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए सिर्फ 6.52। सो द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज सब्सटेंशियली ओवरप्राइस्ड, नॉट ओनली ओवरप्राइस्ड, इट इज सब्सटेंशियली ओवरप्राइस्ड। सो वी अंडरस्टैंड दैट द सिक्योरिटी इज नॉट वर्थ बाइंग, अगर आप खरीदने का सोच रहे हो, एंड सिक्योरिटी इज वर्थ सेलिंग if at all you are holding the security। Right on answer? Actual market price is more than what it should have been। Full stop। So security is overpriced। ब्रैकेट में लिखो 14 exceeds 6.52, full stop। Hence an investor should not buy the security full stop। Investor should
sale security if he is holding, full stop. Revising the entire answer. फर्स्ट वर्किंग नोट में, दैट इज से फर्स्ट क्वेश्चन में हमको इनकम स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। इसके लिए हमने सबसे पहले सेल्स का कैलकुलेशन किया, इट इज 660 मिलियन। उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया। यूजिंग द सेल्स हमने ईबीआईटी फाइंड किया, इंटरेस्ट डिडक्ट किया। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, सो वी हैव टू कंप्यूट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन द ओवरऑल डेट फाइनेंसिंग। ईबीटी माइनस टैक्स तो ईएटी आएगा। 1/6 हम लोग डिविडेंड में पे करेंगे और 5/6 हम लोग रिटेन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमको ग्रोथ रेट फाइंड करना है, बी इंटू आर। हम लोग 16.67 पे करते हैं, तो बाकी का री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, और हमारा रेट ऑफ अर्निंग है 7.8%। बिकॉज अर्निंग आफ्टर टैक्सेस इज 31.2 और इक्विटी और रिजर्व्स का टोटल है 400 मिलियन, यानी 6.5% का ग्रोथ रेट है। थर्ड क्वेश्चन में यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच फेयर प्राइस पूछा है, पर ये फेयर प्राइस को हमको इतना सिग्निफिकेंटली नहीं लेना है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को हमको सिग्निफिकेंटली लेना है। उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट D0 का। डिविडेंड दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे, तो DPS आ गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, D1/KE माइनस C, ऐसा करके P0 का कैलकुलेशन। हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस है 14, जो फंडामेंटल प्राइस है काफी ज्यादा है, तो सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस्ड, ऐसा हम लोग लिखेंगे। एंड वी अंडरस्टैंड दैट से एक इन्वेस्टर के पास अगर ये सिक्योरिटी है तो उनको बेच देना चाहिए, और अगर कोई इन्वेस्टर इसको लेने का सोच रहा है तो उनको हम लोग मना करेंगे।